students, this is Hetal Bhandari from HR Institute of Studies. Now we are going to continue the same chapter we had started in the previous lecture. Chapter number 1 of class 8, rational numbers. We are going to continue the same in this lecture. I had already made you understand the concept of the multiplicative inverse in the previous lecture. Now we shall continue with the sums regarding the same in this lecture. Okay, so find the multiplicative inverse of the following. तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में साइन चेंज नहीं होती, प्लस माइनस के साइन से कोई लेना देना नहीं होता. अगर -13 है तो साइन तो माइनस ही रहेगी, ठीक है. बट मल्टीप्लिकेशन वाला डिवीजन में चला जाएगा एंड डिवीजन वाला मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, ठीक है. सो -13 विल बी -1/13. तुमको ऐसे नहीं लिखने हैं आंसर्स, तुमको ऐसे लिखने. द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -13 इज -1/13. अंडरस्टूड. ये ऐसे लिखे हुए को मार्क्स नहीं मिलेंगे. ये सिर्फ मैंने फटाफट लिखने के लिए, शॉर्ट में लिखने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए लिखा है, क्योंकि मुझे कोई एग्जाम व्यू पॉइंट नहीं लिखना है. बट तुमको एग्जाम व्यू पॉइंट लिखना है तो तुमको कैसे लिखना है? द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -13 इज -1/13. सो -13/19, तो 19/13 हो जाएगा. एंड साइन माइनस की हमेशा ऊपर ही रहेगी, माइनस डिनोमिनेटर में नहीं जाएगा. अगर डिनोमिनेटर में है तो भी वो न्यूमरेटर में शिफ्ट हो जाएगा. क्लियर है? 1/5 दैट विल बी 5, -5/8 इंटू -3/7. तो 5 3 ज़ा 15, 8 7 ज़ा 56, माइनस माइनस प्लस, सो 15/56. -3 इंटू -5 इज 15, माइनस इवन नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट हो रहा है इसलिए प्लस हो गया. एंड 8 7 ज़ा 56, तो 15/56. लेकिन अगर इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स करेंगे तो ये उल्टा हो जाएगा, दैट इज 56/15. क्लियर है? इतना सा करके रुक नहीं जाना है. 56/15 इज द अल्टीमेट आंसर. ओके, so -5/8 into -3/7 is equal to 15/56, and the multiplicative inverse of 15/56 is 56/15. Clear है? Okay. Next, -1 into -2/5 is equal to -1 into -2 is 2/5, and the multiplicative inverse of 2/5 is 5/2. Clear? Now, the multiplicative inverse of 1 and -1 will always be same. Okay, so -1 का multiplicative inverse क्या है? -1. क्यों? बिकॉज अगर मैं 1/-1 करूंगी तो माइनस डिनोमिनेटर में नहीं रहता, वो न्यूमरेटर में शिफ्ट हो जाएगा. तो अल्टीमेट आंसर विल बी -1 अगेन. सो द मल्टीप्लिकेटिव inverse of two numbers, the rational number that does not have a reciprocal, the rational number that are equal to the reciprocal is 1 and -1. The rational number that is equal to the reciprocal is 1 and -1. Okay, now switching to the question number 5. What does it state? Name the property under multiplication used in each of the following. कौन सी प्रॉपर्टी यूज की है मल्टीप्लीकेशन की इन सब में? ओके, so -4/5 into 1 is equal to 1 into -4/5 is equal to -4/5. -4/5 into 1 is equal to 1 into -4/5 is equal to -4/5. इसके अंदर क्या किया? 1 को इंटू करने से नंबर सेम ही रहता है. ये क्या चीज़ है? ये है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, जो मैंने लास्ट लेक्चर में बहुत डिटेल में एक्सप्लेन की है. मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मैंने लास्ट लेक्चर में बहुत डिटेल में एक्सप्लेन की है कि अगर 1 इंटू करने से कोई नंबर में वो नंबर सेम रहेगा, उस नंबर की आइडेंटिटी चेंज नहीं होती है. तो इधर 1 इंटू करने से नंबर एज इट इज सेम रहा, इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी. ठीक है, नेक्स्ट में so here 1 is the multiplicative identity. Okay, next, -13/17 into 2/7 is equal to -2/7 into -13/17. Okay, खाली a into b is equal to b into a ऐसे लिखा है तो उसको बोलते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन. क्या है ये? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन. ओके, switching to the next sum. Question number 3. -19/29 into 29/-19 is equal to 1. -19/29 into 29/-19 is equal to 1. ये क्या हो गया? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स. मैंने -29 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स करूँ तो 29/-19 हुआ, कट हो गया. 29 -19 तो ये क्या आ गया? 1. तो इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स. व्हेन द प्रोडक्ट ऑफ द रेसिप्रोकल इज 1 देन इट इज नोन एज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स. जब प्रोडक्ट ऑफ रेसिप्रोकल्स अगर 1 आता है तो उसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स. ओके,
Next, switching to the next sum, multiply 6 upon 13 by the reciprocal of 7 upon 16. तो सबसे पहले अपन रेसिप्रोकल ऑफ -7 अपॉन 16 करेंगे तो -16 अपॉन 7 आया. अब अपन को क्या बोला है, मल्टीप्लाई करना है 6 अपॉन 13 को रेसिप्रोकल ऑफ 7 अपॉन 16 -7 अपॉन 16 से. तो मैं 6 अपॉन 13 इंटू -16 अपॉन 7 करूंगी तो क्या आएगा मेरा 16 6 96, 7 13 91. सो -96 अपॉन 91. अगेन repeating the question, multiply 6 upon 13 by the reciprocal of -7 upon 16. So the reciprocal of -7 upon 16 will be -16 upon 7. So 6 upon 13 into -16 upon 7 will be 6 into -16 is equal to -96 and 13 into 7 is equal to 91. Understood? So switching to the next sum, tell what property allow us to compute 1 upon 3 into 6 into 4 upon 3 as 1 upon 3 into 6 into 4 upon 3. Okay, easily associative property under multiplication. खाली property का नाम लिखना है, clear है. A into B into C is equal to A into B into C. तो ये कौन सी property हुई, associative property under multiplication. A into B into C is equal to A into B into brackets and outside the brackets into C, that is associative property under multiplication. This same property is used here, so we will write associative property under multiplication. Okay, switching to the next sum, is 8 upon 9 the multiplicative inverse of -1 integer 1 upon 8? Is 8 upon 9 the multiplicative inverse of -1 integer 1 upon 8? Why or why not? So we will start with LHS. The LHS is 8 upon 9 and the RHS is the multiplicative inverse of -1 integer 1 upon 8. So when it will solve the mixed fraction into the improper fraction, it will be 8 ones are 8 plus 1 9. So -9 upon 8. So the multiplicative inverse of -9 upon 8 is -8 upon 9. Multiplicative inverse of -9 upon 8 is -8 upon 9. So LHS is not equal to RHS because 8 upon 9 is not equal to -8 upon 9. Okay. Again, is 8 upon 9 the multiplicative inverse of -1 1 upon 8? Why or why not? LHS is 8 upon 9 and RHS is the multiplicative inverse of -1 1 upon 8. Here -9 upon 8. So -1 integer 1 upon 8 is -9 upon 8 and the multiplicative inverse of -9 upon 8 will be -8 upon 9. Clear? So here the LHS is not equal to RHS because 8 upon 9 can never be equal to -8 upon 9 because 8 upon 9 is a positive integer and -8 upon 9 is a negative integer. Clear with this point? Switching to the next question. Is 0.3 the multiplicative inverse of 3 integer 1 upon 3? Why or why not? Is 0.3 the multiplicative inverse of 3 integer 1 upon 3? Why or why not? Okay, here the LHS is 0.3 and RHS is equal to multiplicative inverse of 3 integer 1 upon 3. Now 3 integer 1 upon 3 will be 10 upon 3 because 3 3s are 9 plus 1 is 10, 10 upon 3. And the inverse of it will be 3 upon 10. The decimal form of 3 upon 10 will be 0.3. Single digit 0 na, so 3 के पहले point लग जाएगा. So here the LHS is equal to RHS because both the numbers in the decimal form are same. So here 0.3 is the multiplicative inverse of 3 integer 1 upon 3 because the decimal form of the multiplicative inverse of 10 upon 3, that is 3 upon 10, is 0.3. Clear with this point? Okay. Switching to the next question. The write the rational number that does not have a reciprocal. Write the rational number that does not have a reciprocal. So 0 is only the number that does not have a reciprocal, else all number have its own reciprocal. Okay. The rational number that are equal to the reciprocals, I already made you understand the same point in the previous sum. The rational numbers that are equal to the reciprocal. So there are only two rational number which is equal to the reciprocal, that is 1 and -1. Okay, I already made you understand the concept regarding the same. Okay, the rational number that is equal to its negative
which is the rational number which is equal to its negative 0, because 0 is neither positive neither non-negative. Okay, so the rational number that is equal to its negative is only 0, because it is a neutral national number, because 0 is neither positive nor a negative integer. Okay, now fill-ups. 0 has no reciprocal. The numbers dash and dash are their own reciprocals, that is 1 and minus 1, understood in the previous sum. The reciprocal of minus 5 is minus 1 upon 5. Reciprocal of 1 upon x, where x is not equal to 0, is x. The product of two rational numbers is always a rational number, and the reciprocal of a positive rational number is positive. Repeating the same, 0 has no reciprocal. The numbers 1 and minus 1 are their own reciprocals. The reciprocal of minus 5 is minus 1 upon 5. The reciprocal of 1 upon x, where x is not equal to 0, is x. The product of two rational number is always a rational number. The reciprocal of a positive rational number is a positive rational number.